ప్రస్తుతం సిడబ్ల్యూసి భేటీ ముగిసింది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు కాంగ్రెస్ నేతలు మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Gandhi address to General Secretary Organization as also a letter written earlier by certain Congress leaders to the Congress President. The CWC has extensively deliberated on the letters and after detailed discussion places on record the following. First, the last 6 months have seen the nation in the throes of multiple crises. We have been beset by the corona pandemic that continue to claim thousands of lives, to downward spiraling economy, through massive job losses and growing poverty, and for brazen aggression into and occupation of Indian territory by the Chinese. Second, the two voices that have been at the forefront of exposing the government's inadequate responses. Divisive politics and audacious propaganda are of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi. Srimati Sonia Gandhi had questions on the handling of the migrant crisis put this government to shame. She ensured that Congress-ruled state tackled the pandemic effectively and provided access to health care and treatment to all sections of the people. Her leadership has wrangled and embarrassed those occupying the highest offices in the government. Sri Rahul Gandhi has resolutely led the fight against the government from the front. The CWC, reflecting the overwhelming view and desire of the rank and file of the Congress, unanimously resolved to strengthen the hands of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi in every possible way. The CWC makes it clear that no one will be or can be permitted to undermine or weaken the party and its leadership at this juncture. The responsibility of every Congress worker and leader today is to fight the pernicious assault on Indian democracy, pluralism and diversity by the Modi government. Third and most importantly, the voices of our two leaders have inspired generations of Indians, both within and outside of the Indian National Congress, to rise and demand answers from the government, which seeks to desperately distract the people through shallow and manufactured issues. It is under their leadership that crores of Congress workers and supporters have reached out to fill the large careless gaps in governance left by this government, as a result of which millions belonging to the poor and middle classes have been unjustly deprived of their rights and their livelihoods. Fourthly, the CWC notes that inner party issues cannot be deliberated through the media or in a public fora. The CWC urges and advises all concerned to raise such issues only in party fora in the interest of propriety and discipline. Fifthly, the CWC authorized the Congress President to effect necessarily organizational changes that she may deem appropriate to take on the challenges listed above. In the light of the above deliberations and conclusions, the CWC unanimously requests Srimati Sonia Gandhi to continue to lead the Indian National Congress until such time as circumstances will permit an AICC session to be convened. This is what we passed today. There's no time frame for the AICC. We'll just take question. I'll just do the interview and then we for many friends who. नमस्कार दोस्तों, जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव आपको अंग्रेजी में पढ़कर बताया, उसका हिंदी रूपांतर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 24 अगस्त 2020 कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संगठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा
कांग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संज्ञान लिया। सीडब्ल्यूसी ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्श किया एवं विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में नंबर 1 कोरोना महामारी है जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2 तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3 करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4 चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। दूसरा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूर्ण विफलता को उजागर करने व विभाजनकारी राजनीति एवं भ्रामक प्रचार प्रसार का पर्दाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रीमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजपा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की। श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना महामारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्थ्य सेवाएं व इलाज समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो सकें। उनके नेतृत्व ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को झकझोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया। श्री राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का दृढ़ता से नेतृत्व किया। कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता की व्यापक राय व इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों व प्रयासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। तीसरी व एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। जबकि सरकार जनता को अपने खोखले व स्वनिर्मित मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है। उनके नेतृत्व में करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थक बाहर निकल पड़े ताकि मौजूदा भाजपा सरकार के अधीन शासन की भारी कमियों की भरपाई हो, जिनकी वजह से गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को अपने अधिकारों व आजीविका से वंचित होना पड़ा। चौथा, सीडब्ल्यूसी ने इसका भी संज्ञान लिया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर विचार विमर्श मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक पटल पर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को राय दी कि पार्टी से संबंधित मुद्दे पार्टी के मंच पर ही रखे जाएं ताकि उपयुक्त अनुशासन भी रहे और संगठन की गरिमा भी। पांचवां, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। Any questions now? You welcome to ask one by one. I had asked Yes, we two, will three start with questions. One is that there was a committee that has been constituted. Secondly, that is to help Congress president. Second
who suggested that action should be taken against the letter writers. They challenge saying take whatever action we want. If you can come clean, because otherwise then you will say media is misreporting. So if you can please put this at the record. Can I take this? I think the resolution, my dear friend, is extremely clear. There is nothing more, nothing less than what we have given you in letter and spirit here in the print, and you can read whatever you want to hear. And let me read it again for your kind consideration. Sir, may I just borrow this? No, because I'll- Mrs. Gandhi said, no, I know the resolution. Sir, I did see that. just 1 minute. No, my point is Mrs. Gandhi said, Okay, Sunil bhai. Mrs. Gandhi said that I hold no ill will against them, but there are some who said that there should be disciplinary action. Yes. Is the matter settled with Congress? I'm answering both questions. You raise very important and pertinent issues. The resolution clearly says that the CWC authorizes the Congress president to effect necessary organizational changes that she may deem appropriate to take on the challenges listed above. संगठनात्मक बदलाव का संपूर्ण अधिकार कांग्रेस कार्य समिति ने एक मत से कांग्रेस अध्यक्षा जी को दिया है कि वो जिस प्रकार का संगठनात्मक बदलाव चाहें वो अवश्य करें ताकि सब चुनौतियों का सामना किया जा सके. योर सेकंड क्वेश्चन प्लीज, कैन यू? So does the matter get settled in terms of disciplinary action Yes. against those letter writers, because they challenged and said that they have done nothing wrong, they stand by the letter, they've never attacked anybody, and Mrs. Gandhi then says that she does not hold any ill will against these people, so let bygones be gone. What do you have to say to that? With the permission of the General Secretary organization, and let me very candidly say, I think the matter was summarized in the most appropriate words of Shrimati Sonia Gandhi ji in her concluding and final remarks, on which note the meeting ended. And she said, and if I may just quote, Congress President clearly said, "We are a large family. We have differences and different views on many occasions, but in the end, we come together as one. The need of the hour is to fight for the cause of the people and the forces that are failing this country. Organizational issues and organizational issues are always addressed, and the process of constitution and reconstitution is a continuous one." Srimati Gandhi also said that she does not hold it against any colleague, any ill will or any other thought of any other nature, for she treats them as part of the family, irrespective of however hurtful the remarks today or in the past many years of any colleague have been. She said, "I have always risen above them to keep the Congress family together and to fight for the cause of the people." And that's the message she gave to Congress workers and leaders. After I take that question, I'll come to you, Janendra ji. Yeah, I'll take that question and I'll come to you, then you ask.